Aryant, I succeed. Sample paper maths. Standard. Stage 3rd. Unsolved question. Sample question paper 11. Part A. Section 1st. Question number 4. Find the value of cot square 30 degree plus 8 sin square 45 degree plus 3 upon 2 sec square 30 degree plus 2 cos square 90 degree upon 2 sec 60 degree plus 3 cosec 30 degree minus 7 upon 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले यहाँ हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करेंगे। सो cot 30 होता है √3, सो cot स्क्वायर 30 विल बी √3 स्क्वायर प्लस 8 sin 45 होता है 1/√2, सो sin स्क्वायर 45 विल बी 1/√2 स्क्वायर प्लस 3/2 sec 30 होता है 2/√3, सो sec स्क्वायर 30 विल बी 2/√3 स्क्वायर प्लस सो cos स्क्वायर 90 विल बी 2 into 0 स्क्वायर that is 0 अपॉन 2 sec 60 होता है 2 प्लस 3 cosec 30 होता है 2 माइनस 7/3 tan 60 होता है √3, सो tan स्क्वायर 60 विल बी √3 स्क्वायर। नाउ √3 स्क्वायर विल बी 3 प्लस 8 into 1/√2 square will be 1/2 plus 3/2, 2/√3 square will be 4/3 plus 0 upon 2 into 2 4 plus 6 √3 square होगा 3 and 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, so this will be -7. So from here 8 will be cancelled out 4 times, so 3 plus 4 from 2 4 will be cancelled out 2 times, and from 3 will be cancelled out plus 2 upon 6 or 4 10 minus 7 3, so 3 plus 4 7 plus 2 9 upon 3, that is equals to 3. This is our answer. Question number 4. If 3 cot theta equals to 2, then find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta. तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है 3 cot theta equals to 2. So from here cot theta will be equals to 2/3. We know that cos theta is equals to base upon परपेंडिकुलर। सो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। लेट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज थीटा। सो with respect to angle theta, our base will be 2 and perpendicular will be 3. So hypotenuse AC will be equals to under root AB square plus BC square. This will be equals to 2 square that is 4 and 3 square that is 9. So under root 13. Now sin theta is given by perpendicular upon hypotenuse, that is 3 upon root 13, and cos theta is given by base upon hypotenuse, that is 2 upon root 13. Putting value here 4
into sine theta, that is 3 upon root 13 minus 3 cos theta, that is 2 upon root 13 upon 2 into sine theta, that is 3 upon root 13 plus 6 cos theta, that is 2 upon root 13. So root 13 will be LCM here, and here LCM will be root 13. So LCM will be root 13, 12 minus 6 upon, in denominator LCM will also be root 13, 6 plus 12. Root 13 will be cancelled out. So 12 minus 6 will be 6 upon 18. This will be cancelled out 3 times. So 1 upon 3. This is our answer. Number 5. If xi are the midpoint of the class interval of group data and fi are corresponding frequency and x bar is the mean, then find the summation fi minus x bar. We know that mean x bar is given by summation fi xi upon n. So from here summation fi xi is equals to n x bar. In this problem we have to find summation fi into xi minus x bar. This will be equals to summation fi into xi minus summation x bar. We know that summation x bar is equals to n x bar, and summation fi xi is equals to n x bar. Putting value here, n x bar minus n x bar. This will be equals to 0. This is our answer. Question number 6. Find the distance between the point P minus 6, 7 and Q minus 1, minus 5. इस प्रॉब्लम में हमें दो पॉइंट दिए हैं. एक पॉइंट है P डेट इज माइनस 6, 7 एंड दूसरा पॉइंट है Q डेट इज माइनस 1, माइनस 5. हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है. सो लेट दिस इज x1, y1, x2, y2. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं हम d से, डेट इज गिवन बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. x2 है माइनस का 1 माइनस x1 इज माइनस 6, सो माइनस माइनस विल बी प्लस होल स्क्वायर plus y2 is minus 5 minus y1 is 7 whole square. Minus 1 plus 6 will be 5 square plus minus 5 and minus 7 will be minus 12 square. 5 square will be 25 plus minus 12 square will be 144.
So 144 plus 25 will be 169. That is equals to 13 unit. This is our answer.